I'm saying it is connected. I'm saying there Which can one be. then? It is then 2043 का जो है law जो वहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, which entry does it relate to? Well, entry 55. If it relates to entry 55, that says expressly authorized to enlarge the jurisdiction. Expressly authorized by or under the Constitution. इसमें तो नहीं है कोई, Well, इसमें express नहीं है ना. I would say this would fit in probably in the under the Constitution category. In 185. But it has to be express. It's not express. That is why, my lord, And this express is, under the Constitution. No, but even under the Constitution, for example, if you look at the interim Constitution, if you look at the 62 Constitution, they had specific articles. Yes, my lord. To this effect, the Supreme Court shall have such other jurisdiction as may be conferred by law. Article 188. Whatever it is. Yeah. So that could be under the Constitution. Yes, right? ma'am. As opposed to the By the examples that you gave, which were by the Constitution, express. But here, both are express. But here, there is nothing, and I'm talking of 2043, there is nothing express. My lord, I bow to that. That is a difficulty with entry 55. And your lordship is absolutely right. Entry 55 is the same as entry 55 of the 1972 Constitution. But in the 1972 Constitution, entry 55 in its present incarnation had to be read with Article 188. And there Could be read. could be read, and there you could draw the connection. But what the 1973 Constitution has done, it has omitted Article 188. Actually, if you look at it, both the 73 and the interim Constitution, the relevant entry 55, they are very similar to, if not identical to, the equivalent entry in the Government of India Act Yes, in relation to the federal court. In relation to the federal court, yes. the 7th schedule, first list 1, that had a virtually equivalent provision. So these two articles trace Well, back to, with one difference. The entry in the Government of India Act only talked about enlargement by the Constitution. It did not use the word under the Constitution. because there was nothing in there. That Exactly. So, here we have the the interim Constitution, which did have that article, and the 73 did not. But by or under is there. by or under is there. Now, your lordships So have to there- give some meaning to the words under the Constitution. So that's the question. You see, just so summing it up, what you said so far is that under 191, the law that's mentioned there draws its strength from 55. So there has to be a law relating to enlargement of jurisdiction, and within that law, there will be an ancillary provision relating to practice and procedure, and that's the only way to harmonize the two. So I have two questions. One, that when we talk about under the Constitution, to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. So by to jo Constitution mein aa gaya. So what does under the Constitution mean? Number one, and number two, the jurisdiction vested in the Supreme Court, like under the Competition Act, as I asked earlier, Section 44 says there's an appeal. So now that's not expressly given in the Constitution. So फिर उस law का क्या होगा? My lord, I will answer both. I will explain, address each of the appeals under the statutory jurisdiction. But if I can just add one caveat to this. तो उसका आपका आर्ग्यूमेंट तो उसका ये है ना कि कंपटीशन कमीशन की एंट्री है, उस एंट्री में लॉ बन गया है और उस लॉ में फिर एंसिलरी पावर दे दी गई सुप्रीम कोर्ट को. Actually, मेरा आर्ग्यूमेंट तो लाहौर हाई कोर्ट में बिल्कुल फर्क था. My ladyship, Justice Aisha Malik did not accept that. So I will go by the law declared by my ladyship. Your ladyship Which is under challenge before us now. It is under challenge before. Then don't talk about cases which are under challenge. मुनासिब नहीं होगा. जी ठीक है, मैं इसीलिए मैंने वो obviously अपने written submissions भी और इसी के आपको I just want to put a question है, पर आप उसका इकट्ठे जवाब दे दें. Entry 58 भी थोड़ा सा shed some light as to matters which under the Constitution are within the competence of the Parliament. So could not law mentioned in 191 pass the test of 58, number one? And what does it mean to relate to the Federation? Yes, I will address. If I can just add one point. In this formulation that I have sort of submitted before the court, that 191 leads you to 142 and then entry 55 and then 59. There's one overarching principle that will be in play.
that even if a law passes all three, through all these hoops and provides, makes a provision for practice and procedure of the Supreme Court, it still cannot do so in a manner which undermines some constitutional principle, like independence of judiciary. Well, that's a separate question. We are still on the competence issue. Once we have that law, then that has to be tested on the grounds of. वो तो और सवाल है. Yes. But let's continue the competence issue first. Yes. So the first point. So I've given your lordship two examples of what could, of instances which could be used as to say that the Constitution expressly authorized, enlargement of jurisdiction is expressly authorized by the Constitution. One was 247(7), my lord. Then Article 185. The third one was something that was pointed out by my lord Justice Munib Akhtar in his Gomal Medical College judgment, Article 212, 2 and 3. That's where a provincial law setting up a service tribunal is then, there is an act of parliament saying that with respect to appeals for that, from that tribunal, the jurisdiction would be with the Supreme Court under 212(3), and your lordship specifically said that's an instance of enlargement of jurisdiction. So these are three examples that I could think of where express authorization by the Constitution dealing with the jurisdiction of the Supreme Court per se exists. Now, my lord, what do you mean by under the Constitution? So, as a starting point, your lordships will note what my lord Justice Munib observed and I submitted, that entry 55 originated in its present incarnation in the interim constitution of 1972. And the interim constitution of 1972 had a catch-all provision, Article 188, which said that the Supreme Court will have such other jurisdiction as may be conferred by law. So that Article 188 has been omitted and we are now left with entry 55. So we have to give some meaning to these words under the Constitution. Well, it is, I would say it's not really clear, but I have a point of view on the which I'll place before the Honorable Court. I say, my lord, there are provisions in the Constitution which allow for a particular framework to be created on a particular subject on which a hierarchy of fora could be created, and then against that an appeal to the Supreme Court could be provided. My lord, there are two specific examples that come to mind. One is Article 6, Clause 3. This deals with high treason. My lord, high treason, much as it defines what high treason is, and then it says, Majlis Shura, Parliament shall by law provide for the punishment of persons found guilty of high treason. Now, in pursuance of this, my lord, the 1976 Act, which is the 76. Well, this was the Criminal Law Amendment Special Court Act of 1976. This was promulgated, and Section 12, subsection 3, provided, it allowed for the setting up of a special court to comprise of judges of the High Court, and Section 12, subsection 3 said. What's this Act? 76 kya? Well, this is the Criminal Law Amendment within brackets Special Court Act 1976. ये इसकी date of promulgation क्या है? ये है जी, it was published in the Gazette, my lord, on 19th April 1976. 26. 76. इसमें amendment नहीं आ चुकी हुई? My lord, Check कर रहा है. I can check, but not according to my knowledge. I'll double check. You wanted to read section 12(3). 12(3), any party aggrieved by the final judgment of the special court may prefer an appeal to the Supreme Court within 30 days of the passing of the judgment. So this provides a direct appeal from a special tribunal. Now this special tribunal was set up on the touchstone of Article 6. This is not... This power vests in the Constitution. My lord, my submission May I is... read it and tell me does, which provision? Article 6, 3. Partly, where does it say? It says Parliament shall by law provide for the punishment of persons found guilty of high treason. It only deals with the matter of punishment. Where does it create the power to appeal? My lord, but it has to be, because punishment could only be through a court.
It can't be otherwise. भाई अपेलेट फोरम तो स्टाइल 3 क्रिएट कर रहा है ना। जी, punishment के लिए law भाई आया। आप बात समझने की कोशिश करें ना। My lord. आपने इसका तस्करा किया आर्टिकल 6 का। आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन एक जुर्म होता है, ठीक है, जो आइन को पामाल करे, ठीक है, उसके तहत सजा दी जा सकती है। आइन सिर्फ ये इख्तियार दे रहा है अब पार्लियामेंट को क्या इसकी सजा कितनी होना चाहिए, 10 साल, 15 साल, डेथ सेंटेंस, लाइफ, ये तीन में कोई और अल्फाज ऐसे नहीं हैं जैसे हम ये समझ पाएं कि इसमें अपील का भी हक दे दिया गया है। तो अगर यहाँ नहीं दिया गया, या तो आप फिर कहिए जो अपील का हक दिया गया है सेक्शन 12(3) के तहत वो गैर आइनी है, तो फिर तो बात आपकी समझ जाएगी। अगर आप इसके बरक्स आर्ग्यू कर रहे हैं तो ज़रा अपनी बात वजाहत से करें कि मैं समझ तो जाऊं कि आप कहना चाह रहे हैं। My lord, my submission is that Just adding to that question, under आप कह रहे हैं ना under की मिसाल आपने 6(3) दी. Now, as I am reading 55 is that there has to be an extent expressly given in the constitution कि आप enhance कर लें jurisdiction या फिर law में भी होगी। इसका मतलब there is a law which talks about enhancement of jurisdiction of the Supreme Court. So फिर law तो एक है ना, there is a law that must be with, how is that law, how does that law come about? that law, the authority, the competence to frame that law comes from the body of the constitution, Where? not Article 6. नहीं, ये तो इसकी हद तक है। मैं ये कह रहा हूँ और इसमें भी नहीं कि है, सिर्फ इसमें भी इस तरह एक्सप्रेस नहीं है कि you can confer jurisdiction of the Supreme Court as a substantive right of appeal. My lord, So it's tricky. I my mean, lord, this, all I'm saying is that this is a point which is so you must admit which in this, is not this unclear, this under the unclear. constitution. This is res It integra. creates a- Bandari Sahab, we appreciate your fairness. I mean, it's good. I mean, that is appreciated. I'm just placing this. Kindly also turn to my Article mind, 225. there is a specific power conferred by the Constitution to frame a law. Then that law can be framed, and in that law, by definition, an appeal can be provided. The Constitution may not specifically say such law may provide for an appeal. Well, it's inherent in it. It is inherent in it where the Constitution confers the power to frame a law on a particular subject. It gives you all other ancillary powers which include the power to provide an appeal. Absolutely. But in terms of 91, in the first place, there is no power. There is no Power to frame rules is only conferred on the Supreme Court. And item 55, even if it is used standalone, does not meet the muster. It doesn't. Say this, then you are attaching redundancy to the words subject to the Constitution and the law is redundant. No, my lord. Then what does it mean? I'm not saying that. Then what does it For mean example, if your lordships, for a moment, let's assume that the then? Let's not assume, give me no, this I'm case. giving, my lord, I'm giving an example. I'm giving an example. For a moment, assume that the provision that I just read out, section 12, subsection 7, which allowed for an appeal directly to the Supreme Court, the special court, is valid law. Now, for the purposes of that appeal, the Parliament can provide rules of practice and procedure. For example, But that's ancillary. right, no? That's right now, ancillary power. right now, how the petitions are to be drafted, what size paper has to be used, etc. Please, let's It's not. given in Let's. I don't appreciate this contention. Please understand. You are saying a subsidiary power to fix the punishment for an offence implies the power to appeal. Implies an appellate forum as well. Now that is really stretching the English language. My lord, I'm not defending that law. Let me get it right. Then attack it. Then they say it's Why wrong. should I attack it, my lord? It's not a subject matter before your lordship. I'm using that as an example of what Parliament has done. Has it ever been checked, tested, that law, Not according to my lord, I am only कोई केस है 12(3) पे? not according to my knowledge. ये भंडारी साहब ये बताइए, ये वो दे 12(3). the Constitution expressly empowers to the extent of conviction, providing conviction. It does not provide expressly for enlargement of this power. So how under the law, जो आपने बड़ा अच्छा example दिया है, how would you justify this then? Because in the context of item 55,
There's no power expressly provided by or under the law to the Constitution to enlarge this power. My lord, I am not defending that law. No, If your it's- lordship it's- thinks this it's- is not correct, Mr. write Mr. it down. Jose- It's not before your lordship for adjudication Mr. right Zed, now. this is important, so just Fair enough, fair enough. adding, My lord, it's- no, Mr. Zed, just Really, adding, fair enough. You are saying you are not. You're just placing it for us. Exactly. Anyway, fair enough. As what Parliament has practiced. Okay, And I placed some other examples also. then I misunderstood. I thought you were relying upon it. No, fair enough. I'm Point just taken. placing it before, as Point an taken. example of Hey, let's move on. Got parliamentary it. Got it. Mr. Zed, just adding to what Justice Attar just said, you see, then it's very loose, these terms, you see. You said that under entry 55, the expression or the express provision under the law would be something like 6.3, which does not talk about enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court, but it talks about make a law regarding punishment of treason or something to that effect, and then it would carry some provision in it which will have enlargement of the Supreme, which is certainly not an express provision regarding enlargement of jurisdiction. Just a second. So having said that, it's quite loosely worded. Why can't we then apply the same principle? If 6.3 could carry a whole provision of an appellate jurisdiction created here, then why can't we just read that into 191 and make it an enabling provision? It says, it certainly says that Constitution is recognizing that there is a law on directly on practice and procedure. The Constitution envisages that. And then if there is no corresponding entry directly on procedure, I would reconcile that rather than adding redundancy to the word law. I would say this is the enabling provision under which it comes about. So that's one way of looking at it. But my question to you exactly is that where is the Competition Commission's appeal coming from then? Under Section 44, it is not expressly given under any law, and how are you conferring this jurisdiction on the Supreme Court then? If I go by your definition that it has to be either expressed in the Constitution or under the law expressly, Competition Commission doesn't pass either of these two tests, and how come there is a substantive My appeal? lord, I'm that No, I'm appeal just either. asking. And your lordship will recall when I argued that before your lord, my lord in Lahore. Maybe we'll that was appoint you my as a argument. amicus when the matter comes up. No, so that sort of... I can't be an amicus because I was counsel in that case in the Lahore. Okay. No, Sorry. why I'm I referring argued to for that justice is, why I'm referring to that is that if we go by your definition, then these laws will be hit. Wherever there is a jurisdiction conferred on the Supreme Court through some other law, then it doesn't pass the test of 55. My lord, be that as it, Well, I'm not ठीक है, defending any of ठीक those है, laws. ठीक है, you're That's fine. all I wanted to I am, my lord, I am not defending any of those. I am just placing the practice of the parliament before your. Look at another provision, Article 225. नहीं मगर एक अगर बुनियादी सवाल फिर उठ जाता है, अगर आप उनको डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं और अटैक भी नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात तो तय पाई है कि ये आर्टिकल 6 की भी अपील दे दी गई है, पार्लियामेंट दे दी गई है, ठीक है, और कंटेम्प्ट की भी अपील दे दी है पार्लियामान ने, ठीक है। फिर बुनियादी सवाल उठेगा, क्या अपील देना गलत होता है? देखिए ना, या तो उसमें किसी की राइट्स छीनी जा रही हों, हमारी राइट्स तो नहीं होंगी ना लिस्ट में होंगी ए पार्टी या दूसरी पार्टी की बरक्स। ट्रीजन में होगा स्टेट होगा, पीपल ऑफ पाकिस्तान होंगे, वीज़ whoever is alleged or been convicted for treason, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से मगर जहाँ तक कंटेम्प्ट की बात है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का पार आ गया ना, उसने आप अगर सपोज हुई, अगर अच्छा मेरे ऑर्डर के खिलाफ अपील भी आ गई, तो यही अगर इसमें अगर वो ठीक, हम उनको कहेंगे ठीक है, या तो उनको हम रिविजिट करें, तो फिर क्या हम एक तरीक़ेकार चीज़ों को देखने का ये कि अगर बहुत अरसे से कोई चीज़ अटैक नहीं हुई है, चैलेंज नहीं हुई है, तो वो फिर उसी तरफ लीन किया जाएगा कि ये सही है। अगर हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, एक अपील अगर मिल गई तो क्या क़यामत आ गई? ये आपको क्या नुकसान हो रहा है? नहीं, अब आप देखिए काउंसिल की तरफ से नहीं अपेयर हो रहे हैं, अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की तरफ से अपेयर हो रहे हैं। अब आपको तो इतनी खूबसूरत जो आपने बहस की, आपको नहीं चाहिए था बराबर में आप कमरे में कर लेते, उस इमारत में, सफ़ेद वाली में जो इस इमारत के साथ है, वहाँ तो आपने ये बातें कही नहीं। तो हमें ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं वहाँ की आपने बातें? आपने मेरी मर्जी नहीं, आप जब एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमिशन दी है कि आप भी आके कर लें,
तो अब आप ये नहीं, वहाँ तो मैं अपना काम नहीं करूँगा मगर आप मैं बढ़ाऊँगा, ये कुछ जरा समझाएं ये भी बात। मैं आपको मतलब जो लास्ट आपका है जी, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड द पॉलिटिकल डिसीजंस ऑफ No, you are represent, no, sir, ये बात बड़ी, आप आराम से वॉक अवे ना करें। आप इधर आप आए हैं, आपने बिलखुसूस कहा कि मैं एक पॉलिटिकल जमात की तरफ से हूँ। अगर आप अपने तौर पे आते हम आपको सुनते, आपसे ये सवाल नहीं पूछते। जब आपने ये बात कह दी है तो फिर आपसे हम सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि अक्सर सवाल ये उठते हैं कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, मैलिफिडे है या क्या, तो आपका तो एज ए वकील तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मगर आपसे सवाल तो जायज़ है, तो आप जब सवाल my answer is simple, my lord. That was a political decision to resign from the assemblies. The constitution permitted that, and that was the decision. यहाँ भी पॉलिटिकल डिसीजन ले लेते कि अदालत के सामने नहीं आते। My lord, that is again for them. ये देखिए नहीं, ये अपनी बेबसी ना जाहिर करें। अब आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं एक क्लाइंट को कर रहा हूं तो मैं उसके हर एक्शन का जिम्मेदार तो नहीं, हर एक्शन नहीं, मतलब इस केस का पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ हम आपको देखें, एक मुख्तसर बात ये भी हो सकती है, हम आपको सुना ही नहीं, हम आपको बिल्कुल रहे हैं आपके पास अगर हम कह रहे हैं ये एक सवाल उठता है, अब हो सकता है अगर आप अपने इतने खूबसूरत दलाइल देते, वो शायद आपकी बात मान के कोई और चीज कर लेते या ना करते। ये बात मैं तो अग्री कर रहा हूँ आपसे कि शायद वो अच्छी चीज होती, बिल्कुल शायद करना चाहिए था वो, मतलब with the benefit of hindsight, my lord, everybody can be very helpful. Maybe my client also thinks that it should not. So we take it that under the constitution is a bit of a. My lord, let me just address the point. I'll come to that. My lord, the Chief Justice raised the point about appeal being beneficial. My lord, there are two instances. There are two instances where appeals were provided to this honorable court by provincial statutes, and your lordship struck. Two cases. The first one was बहुत ज़रा फर्क हो जाएगा, प्रोविंशियल स्टैट्यूट तो नहीं, मैं सर बात प्रिंसिपल ये है कि नहीं, असूल फर्क हो जाएगा। नहीं सर, मैं अर्ज कर दूं, in a constitutional dispensation, my lord, the only principle is that the right thing must be done by the right authority. That's the whole concept of jurisdiction. That's the whole concept of competence. The right thing done by the wrong authority means nothing. That's what your lordship said. In province of Punjab versus National Industrial Cooperative Credit Corporation, 2000 SCMR 567, a right of appeal was provided. 2000 SCMR 567. A right of appeal was provided. Do you say that Parliament is not the right forum to pass a legislation, provide appeal to the aggrieved person? The Parliament is when it is acting in its capacity to amend the Constitution. Yes. Not while enacting ordinary legislation. The Parliament wears two caps. One is that of an ordinary legislature, and one is when it is amending the Constitution. An appeal for the purposes of Article 184(3). What do you say about election laws, where the appeal has been provided, Well, but it has not been provided by the Constitution? I was coming exactly to that. The second judgment, the second judgment is, my lord, the Dean Gomer. ये कौन सा लॉ उड़ाया इस? This was the Punjab Undesirable Cooperative Societies Act of 1992. Undesirable Cooperative Societies Act. Cooperative Societies Act of 1992. Society Act of This is 2000 of SCMR 1992. 1992. तो उन्होंने हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। हाई कोर्ट के सिंगल जज के खिलाफ कोऑपरेटिव जज पर पर्सोनल डेजिग्नेटर अपॉइंट करके उनके फैसले के खिलाफ अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट दे दी, प्रोविंशियल स्टैट्यूट। और आपने ये होल्ड किया कि वो तो नहीं कर सकते थे, मैं ये राय हो सकती है। अपील, अगर अपील अच्छी चीज है तो आप हाई कोर्ट में देते हैं ना वो। मैं ये कह रहा हूँ ना सर, बात हाई कोर्ट का नहीं था, बात थी कि जी अपील सुप्रीम कोर्ट में अच्छी चीज है, लेकिन गलत अथॉरिटी इसको ऐसे ना मोड़िए, देखिए ऐसे ना कीजिए। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात होती है, सूबाई पार्लियामेंट एग्जैक्टली ना, तो सुनिए, तो सूबाई पार्लियामेंट यकीनन हाई कोर्ट को तो इख्तियार दे सकता था, सूबाई पार्लियामेंट को कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता ना यार। तो यही तो, इसलिए तो उड़ गया कानून, वो किसी और ग्राउंड पे उड़ा है, इस ग्राउंड पे नहीं उड़ा। नहीं सर, मैं प्रिंसिपल वही लगा रहा हूँ, इसी ग्राउंड से चले कहते हैं। दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस कौन सा है? ये बता दें कि when we read the word law, how do we see कि which parliament, which authority is competent, whether it's the province or the federal government? Everywhere that the Constitution says to law, if we say this is an enabling provision, then we will read that as a law-making provision. Then where will we place the authority? कि ये law जो है ये province बनाएगा, ये law federation बनाएगा, ये कैसे determine होगा? मैं अभी आपको, ये सर दूसरी judgment subject matter will PLD
PLD 2023, Supreme Court 190. आप page 2023? 2023 Supreme Court 190. 190. 190. 190. 190. कौन सा कानून उड़ा है? ये जी मुख्तलिफ प्रोविंसेस के थे जहां उन्होंने सर्विस ट्राइब्यूनल से अपील सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी विदाउट देयर बीइंग एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. योर लॉर्डशिप ऑथर्ड दैट. तो द गोमल यूनिवर्सिटी जी गोमल मेडिकल कॉलेज. ये थोड़ा सा भंडारी साहब ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है क्योंकि here the appeal is being provided against a judgment passed by the highest court while exercising its original jurisdiction. Usse upar there is no other court. So it is actually securing the right of access to justice. Otherwise, ये जो आप जिन पे rely करें, they are distinguishable because there were other forums available. या जो भी ground से here, it is the highest court. इससे ऊपर there is no other court. My lord, the question is one of competence. The province was not competent to legislate on this point. Just as, in my humble submission, Parliament is not competent in its capacity of an ordinary Parliament to provide an appeal and for 184.3. It can most certainly do that by adopting the procedure given in 238 and 239 by acting as the Constituent Assembly. My lord, if take your lordship's point a bit further, Article 175 says if Parliament is omnipotent in this sense that if it can do whatever it wants by law, then 175 says, 175(1), there shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. Then could the Parliament then set up a super Supreme Court to hear appeals? Article 184.3. Are you suggesting that the Chief Justice is omnipotent? Suppose. I'm not. No, that's only, Jana. Suppose. I know it's an absurd example, but sometimes you have to give absurd examples to make a point. I, sitting in a bench, not this full court, say, with due respect, don't mind it, Mr. Uzair Bandari always comes and wastes time on court, and he takes up cases infringing violation of fundamental rights. He is prohibited from appearing before this court or any court in Pakistan, and his license stands revoked. Kar diya. What can you do? Nothing. Nothing. In a fit of rage, anger, I mean, surely we are also human beings, unless you say the minute we take oath, we lose all those things. I remain vulnerable, and that's what the Quran teaches us, that you will make mistakes. Otherwise, वो तो माफ़ी का भी कॉन्सेप्ट चला जाएगा फिर तो इस्लाम से, क्योंकि आप तो गलती कर ही नहीं सकते. अगर मैंने किसी गलती कर लिया, तो बस वो हो गया. अब वो रह गया रिव्यू जुरिसडिक्शन, ठीक है? रिव्यू जुरिसडिक्शन की महदूद है, बस ख़त्म हो गई बात. Even though on the face of it ये बिल्कुल ही नहीं था, और ऐसी आर्गुमेंट्स आप लोगों ने भी किए हैं कि 184.3 का आपने बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया है. बिल्कुल ठीक है. आयात में आपने जब भी 184.3 छुआ है सही इस्तेमाल से नहीं. तो फिर अब आप जब ये रियलाइज कर रहे हैं, एक होता है एकेडमिक डिबेट कि जी अगर हमने किया होता गलत तो फिर पार्लियामान को ये करना होता. तो पार्लियामान ने देखा है पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि जी 184 उनके लिहाज से, और आप भी ये कह रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हुआ है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप और पार्लियामान तो ये बात कर रहे हैं. तो उन्होंने एक राइट ऑफ अपील दे दी. तो इसमें आप कह रहे हैं हमारे इख्तियार, वो वाले इख्तियार जो मैंने इस्तेमाल किए, इससे मैंने आप पर पाबंदी लगा दी कि आपके सारे वो फंडामेंटल राइट भी छीन लिए कि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में. वो हरफ आखिर हो गया. तो इससे ज़्यादा ओमनीपोटेंसी क्या हो सकती है? आप पूरे पार्लियामेंट पे तो उंगली उठा सकते हैं, मगर ओमनीपोटेंसी ऑफ द चीफ जस्टिस के मुतालिक आप खामोश. मैं बिल्कुल खामोश नहीं. जो चीफ जस्टिस की पावर्स भी हैं, तो वो मैं आपको एक मफरूजा दे दिया, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, क्या करेंगे? उसका अगर इस किस्म का एक्सट्रीम कोई होगा स्टेप होगा तो फिर उसके शायद और भी कुछ हो सकते हैं. लेट्स आप मेरे साथ, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा नहीं करेंगे. You could move to Oxford and start teaching. भूख हड़ताल पे ना जाइएगा. That also dovetails into the concept of finality of judgment. Now there has to be a finality somewhere. I mean, it doesn't mean that every judgment that the Supreme Court gives is right. I mean, some judgments may be totally wrong. Absolutely. But
the policy of law, and all over the world the policy of law is there has to be a finality attached. If you keep giving appeals, then it is an endless exercise which would take the entire purpose of the judicial system. अगर मैं इजाज साहब की बात से एक हद तक अग्री करता हूँ और एक हद तक नहीं करता हूँ, और बता देता हूँ क्या है। एक है आपका आम केस, सिविल कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, आता हुआ सुप्रीम कोर्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल फाइनलिटी होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है हमने गलत भी कर दिया हो फैसले, ठीक है। हम वो वाली बातें कर ही नहीं रहे, हम 184(3) की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है ओरिजिनल सीरीज एक ही जजमेंट आए, कोई और जजमेंट है ही। तो वो वाला कॉन्सेप्ट अगर हम, या तो आप कहें वही कॉन्सेप्ट पूरा इधर भी लगता है, चाहे आप एक करो तो फिर ऐसा करें, बाकी अदालतें बंद कर दें, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं, ख़त्म कर देते हैं केसेस को, टाइम भी बचेगा, लोगों के पैसे भी बचेंगे, सिविल कोर्ट जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म करें सारी अदालतों को, हम ये सारे फैसले कर लेते हैं, क्यों इतने हम पैसे खर्च कर रहे हैं। तो फाइनलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बगैर अपील के कहीं दुनिया में है कि एक अदालत एक फैसला करे, उसकी कोई अपील नहीं है। मुझे दुनिया में एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कहीं कोई भी दुनिया में कहीं भी दे दीजिए एग्जाम्पल। बट मैं मेरा इस पे जो टेक है सर वो फर्क है। 184 आप पहले एग्जाम्पल देना पसंद फरमाएंगे या है ही नहीं कोई ऐसा? सर हमारे सामने मैं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 184(3) है। राइटली और रॉन्गली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर आप तस्लीम करते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है? शायद हो जी, मुझे देखना पड़ेगा। मैं जिस तरह यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, खुदा न खास्ता यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। सो ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे उनके कुछ मामलों में आर्टिकल 3 के तहत उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। बट आई एम मेकिंग अ डिफरेंट पॉइंट। देखिए दूसरी बात जरा सा, हम बार बार सुप्रीम कोर्ट करते हैं ना, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक बुनियादी फ़र्क है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 2, 3, 4, 5 की बेंच नहीं बैठती, पूरी तमाम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं उनके। तो वो ये चीज़ें हम उनको बार बार, हम सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से, उनका सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ हमारे से। सर यूएस हमने अमेरिका को अगर हर चीज करना है तो वहाँ तो गुलामी भी थी, वहाँ तो स्लेवरी भी थी, हमारे यहाँ तो नहीं है। नहीं है वहाँ नहीं, सुनिए, वहाँ राइट ऑफ वोट बड़े सगीर में पहले खवातीन को मिला, उन्हें बाद में दिया राइट ऑफ वोट। उनकी हम लोग इतने मुतासिर क्यों हो रहे हैं वहाँ से? मैं नहीं हो रहा जी, पर वैसे दूसरों की गलतियों से भी तो सीख सकते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ यूएस की बात भी आपने, चले उसके ना भी करें, अब जनरल बात हो रही है तो मतलब यहाँ तो पहली अपील है ना, यहाँ तो सुओ मोटो में बहुत आपने देखा सर, वो तो उसकी फिर अपील भी ना हो। सर देखिए, वैसे जनरल बात कर रहे हैं, गोइंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम, बट आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन दिस। 184(3) में जो कुछ हुआ, अगेन आई एम नॉट हियर टू डिफेंड इट। नो, नॉट सो, मैं ये कह रहा हूं वो गलत है। देखिए, नो, वी हैव टू, एक सेकंड, वी हैव टू लुक एट लिव्ड एक्सपीरियंसेस, यू सी, एंड look at interpretation accordingly. We've seen that suo motu could be abused and there could be an appeal provided. So वो तो बात होगी ना, जाना तो हमने प्रोसेस के थ्रू ही है। प्रोसेस में मेरा आपसे सवाल ये था कि why can't we read into 55 that if suppose a particular provision does not provide any extent, तो उस जगह फर्क नहीं पड़ता, जहाँ extent है उसका हम ख्याल रखेंगे jurisdiction, जहाँ नहीं extent वहाँ it's open and we can enlarge the jurisdiction. You see, the question here, again, I mean, I'm repeating my first question. The question here is not whether should or should not be an appeal. Right now, there is no appeal. The question is, if an appeal is sought to be provided, who is competent to provide that appeal? That is the core question. Whether the Parliament, through a constitutional amendment, has to provide an appeal, or can it be done by ordinary legislation where the jurisdiction has been under 184, has been conferred by the Constitution. So can something be done which has been done by the Constitution by providing an appeal through ordinary legislation? And if I may just take it further, can the Supreme Court provide an appeal under 184(3)? Suppose this law did not exist. The Supreme Court couldn't have done that. No. Can it ever do it? No, not the Supreme Court itself. Never? No. So that means that this to gaya. तो अब आया है सिर्फ we are resting with the constitutional amendment. Sir, hang on, constitutional amendment. Could that constitutional amendment be challenged in the Supreme Court? It can be. And it has been. It has been. And amendment कहा कि yes you can challenge it. आपने तो खुद बढ़ा दी थी। नहीं हमने नहीं, मगर मैं माइनॉरिटी में था, मगर देखिए ना, तो बात वो जो है ना, वो जो सिर्फ रह जाती तो हम तो दे नहीं सकते हैं। अगर हम एक चीज़ नहीं दे सकते हैं और आप तस्लीम कर रहे हैं,
और आप ये कह रहे हैं पार्लियामान दे सकती है मगर सिर्फ थोड़ा सा फर्क रह गया है। नहीं सुनिए, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं करेगी, वो करेगी 2/3 मेजॉरिटी, बस यही फर्क रह गया ना अब, क्योंकि अमेंडमेंट आ गया ना कॉन्स्टिट्यूशन का, बस इतना फर्क आ गया ना। कर सकती है मगर तरीके कार गलत है, और यही असल क्वेश्चन था एजाज साहब का। और मैं बार बार कह रहा हूँ असल क्वेश्चन ये है, आप लोग इधर उधर जा रहे हैं, जो अपना केस मेरे हिसाब से आप कमज़ोर कर रहे हैं। अगर आप उधर ही ठहरते तो शायद आपके लिए आसानी होती, मगर आप क्योंकि अब हमें उधर ले गए तो सवाल फिर उठते जाएंगे। मैं तो अभी अपील वाली प्रोविजन पे एक्चुअली आया ही नहीं था। अपील पर आप आए हैं मिस्टर भंडारी, अपील पर आए हैं तो फिर सवाल, आई विल आल्सो गो बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन दैट अगर राइट ऑफ अपील सब्सटैंटिव राइट दी है तो वो सब्सटैंटिव राइट को कंट्रोल कैसे कर रहा है एक कमिटी ऑफ 3 जजेस विच कैन डिसाइड कि कितने साइज बेंच बैठेगा और उस राइट को ब्लॉक कर देगा। सो देन दैट सब्सटैंटिव राइट ऑफ अपील विच वी वांट पीपल टू हैव, विच दे हैव अ राइट टू हैव अंडर दिस लॉ, that has been blocked even in this case. There is a full court sitting, there is no right of appeal now because that right has been totally blocked. So what was the purpose of creating that right? This is a question that I'm waiting for the Attorney General to answer. But just to ask you this question from this side as well, what would you answer to that? Well, for me that absolutely highlights the problem with this provision. An administrative power will be used and has been used to completely stultify the exercise of judicial So the power. court can never say कि 10 judges बैठेंगे, 11 बैठेंगे, because वो Your appeal Lordship, हो ही नहीं सकेगी। I take it one point further. If the right of appeal has to be provided in every case, right now the sanction strength is 17. That means 9 judges have always to be available to hear an appeal. The largest bench that can be constituted is therefore an 8-member bench. Agar your argument is basically flawed. I'll tell you why it is. Well, let me complete it. No, I'll point out the flaw. Let me complete it. No, because आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. I'll tell you what the flaw in the argument is. The argument is flawed. Why is it flawed? First of all, you say the law is good because it's given a right of appeal. I don't say that. ठहर जाइए ना, ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा ना, वो अभी तो अपील है ही नहीं ना, तो ये हमारे ऑर्डर की अपील कहाँ जाएगी, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होते हैं ना। अभी इस मौजूदा सूरत हाल में अगर ये कानून है ही नहीं तो कोई राइट ऑफ अपील नहीं, ख़त्म। चाहे वो 5 के साथ सुने या 10 के साथ सुने या फुल सुने या कितने नंबर हैं वो सुने, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये कानून पहली दफ़ा ये एक राइट ऑफ अपील दे रही है। अब आपका कहना कि क्योंकि ये कानून राइट ऑफ अपील दे रही है मगर इस केसेस में तो राइट ऑफ अपील होएगी नहीं, सिंपल जवाब है बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर 17 जजेस या फुल कोर्ट भी इतनी बड़ी गलतियां करने लगे तो फिर राइट ऑफ अपील होना ही नहीं चाहिए। एक तो जवाब ये हो सकता है। दूसरी बात है कि हम वी कैन इमीडिएटली दैट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई नेचुरली अपील नहीं है। अगर जो आपने हमें 2 केसेस दिए, हवाला दिए यूसुफ रजा गिलानी वाला, तो पहले बेंच थी 7 की, दूसरी बेंच बनी 8 की, तो इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया जो ये कानून करता है, इससे ज़्यादा तो नहीं किया। कानून भी यही कह रहा है कि राइट ऑफ अपील, तो ये मफरूज़ा पहले हम खड़ा करें, राइट ऑफ अपील किधर जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, ख़त्म, घर जाओ। अगर हमने सब फुल कोर्ट ने कर दिया या इस मिक़दार जजेस ने कर दिया कि वो अपील नहीं होगे, इसीलिए हम बहुत एहतियात से काम करते हैं कि ऐसे केस में तो राइट ऑफ अपील का सवाल नहीं पैदा होता। ये तो एकेडमिक एक्सरसाइज है हमारे इख्तियार की। मगर जहाँ आप कोई अपना कोई केस लाएं, फॉर इंस्टेंस आप अपनी पार्टी का, अगर हमने फुल कोर्ट बिठा दी तो बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम किसी की राइट ऑफ अपील तो है ही नहीं। तो पहली बात तो पार्लियामेंट ने दी है, तो अब कहना कि 99% दे दी तो 1% बच गया तो इसलिए बेकार हो गया, इसलिए ख़राब है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपका आर्ग्यूमेंट फंडामेंटली फ्लॉड है। आप मेरी बात समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट ये मेरा आर्गुमेंट है ही नहीं ना जी। मैं ये कर रहा हूँ, मैं फुल कोर्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं फुल कोर्ट में ठीक है, फुल कोर्ट आप बैठ के फैसला कर दें, उसके ऊपर कोई इसका फायदा कुछ नहीं। कॉम्पिटेंस का इशू पहले हल कर लें। मैं एक बिकॉज़ क्रॉस द कॉम्पिटेंस देन वी गेट इनटू दिस क्वेश्चन। मैं तो जी अब सवाल आ रहे हैं तो जवाब तो देने, इसका फायदा तब होगा ना। मैं एक इसका मेरा एक और फंडामेंटल इशू है जो मैं कह रहा हूँ। आप बताएं। This law, your lordships uphold this law, for let's assume for the sake, then the right of appeal is there. Then in every case under 184(3) you have to make provision for leave 9 judges out so that they can hear an appeal. Therefore the maximum strength of the bench can always be 8 or not more. What will happen in that case to judgments that your lordships have delivered by 9
member, 11 member, 12 No member, appeal. 13 member benches. No appeal. Can you never overrule those judgments then? Overrule is different. देखिए अब आप फर्क में आ गए. तो किसी My और lord, केस- वो अगर हम that's किसी a और केस में curtailment of बैठकर your- That's a curtailment of your judicial power. Is what I'm arguing. right of और केस appeal is a different thing, and right of interpretation and learning from mistakes or becoming wiser is altogether Why different not thing. allow me to articulate my point? My point is that if you are stuck with a maximum 8 or 9 judges in a bench, you can't create a bench larger than 9 in under any circumstances, then you can never overrule larger bench judgments, and that's a आपको curtailment of your... घबराहट क्यों हो रही है अगर राइट ऑफ अपील मिल गई? मतलब आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हो सकता है आप फायदे में इसमें हो किसी केसेस में. जरूर. फिर आप ये दो जजमेंट्स मैंने दिए हैं सर, इनको भी ओवररूल कर दें, प्रोविंस को भी अपील आपसे मैं पूछ रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको फायदा या नुकसान क्या हो रहा है? फायदा नुकसान की बात नहीं. हो रहा है तो बता दें. We are only, कोई फायदा नुकसान नहीं है, सिर्फ the only concern is that Parliament and my client today it's going through difficult time, but it can be in power again. It can be in power again. The history of Pakistan teaches us this. So even then, I am under instructions to say that this is not something that the Parliament should be allowed. ये जो बात आप कर रहे हैं ना, I am under instructions to state. Sorry, हम ये बिल्कुल नहीं accept करेंगे. इस किस्म के cases में you are not under any instructions. You appear to assist the court. ठीक है? I do that. ठीक है, तो your client can say stand on your head or whatever. I'm not concerned with that. This is not his rights or that party's rights that we're talking about, that you can give instructions. जब आपने ये तय कर लिया है कि कोई उनका interest नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कहें साथ साथ I'm under instructions to state. Sorry to say आप मातहत नहीं हैं. You are an officer of this court first and foremost. And in this case, the matter ends there. Doesn't go beyond that. My lord, that goes, your lordship, when I first stood here on the last date, your lordship asked me a question, who are you with? And I said, I'm supporting the petitioners, but with some caveats. That's all I'm saying. That all that I've said, the legal submissions I made are not in the instructions का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें. I'll take that. But the position is that Parliament should not have this power because it may not be used in a benign manner tomorrow. That's the only concern. In other words, we will not use it properly, the right of appeal. No, not your lordship, not you. Who is to stop Parliament from? कल आएगा वो वाला लॉ, फिर आप देख लेंगे. हमने कोई ब्लैंकेट अथॉरिटी को नहीं दे रहे हैं. इस कोर्ट पे इसी कमरे में फिजिकल अटैक्स भी हुए हैं. पार्लियामेंट में जो होता रहा. Sorry. Please stay focused. उसके लिए आप पार्लियामेंट, इसीलिए ये फायरवॉल क्रिएट की गई है अगेंस्ट टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. पार्लियामेंट अपने डोमेन में रह के हजार चीजें करे. हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पार्लियामेंट को भी. जरूर करें. मैं आई एम ऑल फॉर इट. इसीलिए तो मैंने आपको एंट्री 55 में से एक रास्ता देने की कोशिश की है, which goes against what the case law of this court says. Under the constitutional scheme, each organ of the state has been provided bar to make its own rules. The judiciary doesn't make the rules of the parliament. The judiciary doesn't make the rules of the executive. The judiciary makes its own rules. Yes, right? Only those rules made by the executive or other organs which are in conflict with the constitution can be looked at by us, and if we find they conflict with the constitution, they have to be struck down. So those three firewalls have been intentionally, deliberately created by the Constitution, and the interest of every citizen of the state is that they remain intact. Absolutely, my lord. Number two, substantive right hai, right of appeal. My question is, how can a procedural law, even if it is not ultra vires, provide such an appeal? It can't. It can't. Now, Mr. Uzair, if I understand you correctly, and I just want to close this point here, that you're saying that for the purposes of substantive right to appeal, entry 55, we have to, the law has to pass the test of entry 55, and entry 55, then you also say that there are two problems with it which are still unclear and unanswered. One is that there has to be express provision. Under the law is not clear, and it is not clear how jurisdiction is being vested in the Supreme Court through other statutes. So while we rely on 55 for this, 55 itself is shrouded in a bit of a mystery, and there are unanswered questions. Yes. Is that right? Yes. Thank you. Mr. Mindari, just
Now, assuming that this power to make law under 191 is an enabling power, the subject matter is the practice and procedure of the court. So, would it be said that the power of the court, the rule-making power, in respect of this subject matter, and the power, if this is an enabling power of Parliament to make a law, are coterminous, meaning they extend over exactly the same area? My lord, I would say no, because then once Parliament covers everything, then there is nothing. I'm not saying, what I'm saying is, whatever is the subject matter of the practice and procedure of the court has the power to make rules in that regard. My lord. If law as used in 191 is an enabling power, it operates on the same subject matter, and the area therefore is the same. If it is used as an enabling provision, Yes, yes. then yes. But then if that is so, you have just told us, and quite rightly so, that in exercise of rule-making power, the Supreme Court cannot give a right of appeal. Can't. So therefore, if the two powers are coterminous in respect of the subject matter, my question to you is, how can, if it is an enabling power, how can Parliament use Article 191, because that is what is referred in the Yes. preamble, how can it use that power to confer a substantive right of appeal? How is that possible? It can't. It can't be done. So I It's agree not with valid. I agree with the comment made by my little brother, but and just adding to that, to the extent of practice and procedure, if we were to take 191 to be an enabling power, then to the extent of practice and procedure, the law is correct. As far as the substantive provision of appeal is concerned, we'll have to look the other way, and then we'll have to look at 55, which, as I had earlier said, is already full of confusion and not very clear. So that's that. But as far as the law and practice and procedure is concerned, if we were to imagine that 191 is an enabling provision, then the law passes the test, the committee and all the other provisions, except the substantive part of appeal, which is still unanswered, and we wait for the others to My lord, explain. even then, that's why I added a caveat at the outset that even if it is an enabling provision and enables Parliament to enact a statute for rules and procedure on the basis of 191 itself, it will still be subject to some all overarching constitutional principles. Now, one constitution. Fair enough, that's fine. My lord, allow me to finish this. One overarching constitutional principle, which in my humble opinion, and that's what I've submitted, has acquired the status of a constitutional convention, is the power of the Chief Justice to form benches. Now, I'm not for a moment saying that that should not be revisited. I'm not for a moment saying that. I'm saying that since that has achieved the status of a constitutional convention, that constitutional convention is being continued by virtue of the provisions of Order 11 of the Supreme Court rules. Therefore, the Parliament can't undo that, as held by Baz Mohammad Kakar. Your lordships will have to do that in exercise of rule framing power. So after your point, suppose if we were to take 191 to be an enabling power, then we look at the law, and we look at the law, then it has to pass the muster of fundamental rights and all. And yes, I would agree with my little brother who would refer to my earlier order relating to the committee deciding the thing, which is, I'm very clear on that issue. There could be either that has provision, could be, speaking for myself, read down, or we're not sure whether at all they judicially decide this question or administratively decide this question. One would imagine because it's a committee, it is more of an administrative thing. Yes. That's a snag which needs to be rectified, but that's that. Yes, yes. Can I just place a conundrum before you, and if you can respond to it? Another one, my lord. This is the first one. This is the first one that directly affects me. Okay. Since everyone is very kind on both sides of me, and all of you are very kind, let's suppose I, in the person of the Chief Justice, become very unreasonable. All my colleagues ask me to call a full court meeting to amend certain rule which requires amendment, okay, or some other issue. I say, no, I will not do it. So there is, nobody can do anything about it, Pehli baat. So when we talk about, there are two arguments. One is trichotomy of powers. Then within a particular constitutional body like the Supreme Court,
Yes, I can go along with the first one, but then are you also propagating the omnipotency to the Chief Justice, or as used to be criticized, the Lord Chancellor of England, and the equity varies with the Chancellor's foot? So suppose I become unreasonable, tough luck to all of you, to everyone in Pakistan, tough luck. Right? No. How will you resolve this? My lord. Parliament has said, well, you may not like it, Mr. Chief Justice, but we have made an attempt to resolve it, because you are never going to do it. You are never going to do it. And you are, by your conduct, have shown you are never going to do it. So you can say, no, we must persist on omnipotency to the Chief Justice, the person of the Chief Justice, and he can do no wrong. And let him do is it democratic? Is it just? Is it forget the Constitution of Pakistan for the time being. I'm talking now of greater concepts like justice and fairness. Does it meet? We talk about Islam, but surprisingly enough, not one person has mentioned Islam here. Does Islam even permit this? Such a powerful body of one person, unaccountable, totally. And someone legislates, the only thing I find fault with is, how dare you legislate? I can do so, but I will not do so. Now tough luck to you, Mr. Bhandari and everybody else. Do whatever you want to. So it suits me. And like I said, my much too kind to articulate something, but I think it needs to be articulated and said. And please respond to it. How will you check my unreasonable conduct? If I could add to that, not only the Chief Justice's conduct, but suppose if the full court sits down and makes a rule that we'll hear cases twice a week only, we'll only work till 10 o'clock, and so be it. And firewall, good luck to your firewalls. And we're firewalled, we're just very covered, we could just hear cases only twice a day, and twice a week, and just till 11 o'clock or whatever, and we could have a vacation for 6 months, or things like this. So if we're firewalled, nobody can touch us, so we can just run the court the way we want, in any manner that we want. And the parliament, which represents the people, cannot come up and say, sir, what are you guys doing? Come on, have a heart. But can I turn the example on? Can the parliament say that your lordships will work 24/7, 365? जवाब दे दें हम हमारे जरा conundrum का फिर आप confuse हो जाएंगे. Before you reply to these questions, Sorry. let me ask you a question. In the Supreme Court in Pakistan, do we have lifetime appointments or do we have a retirement age? Age of superannuation, yeah. So the composition of the court keeps changing. So basically, you wait till my retirement. If you You can't touch me till I retire. Mr. Bhandari, the late Donald Rumsfeld said something very helpful. He said, we'll jump off that bridge when we come to it. We will deal with such autocracy when your lordship turns it. Precisely, we'll deal with such a law when it sort of takes away our power. If it enhances our power and it makes more transparency, we will not touch it. We'll touch it when it takes away our powers or makes things more. My lord, Mr. Bhandari, do we also have in this, do we also have? Sorry, sir. Mr. Bhandari, Do we also have something? may I ask a something question, called, please? Just a minute, madam. Do we also have something called the Supreme Judicial Council? So if we have, with all due respect, and these are hypothetical examples being given, so my question is also hypothetical. And how effective has been the Supreme Judicial Council? I don't think if I don't call a full court meeting, the matter that, can be taken to the Supreme Judicial Council. I don't think you can stretch misconduct to that extent. My lord, the moment your lordship thinks Let of me turning that ask a autocrat, question, please. My lord, everyone here will I think Let me ask a very question. quiet. मैंने disturb कर देना सबको. मुझे भी इजाजत दी जाए. बस I'm sitting quiet. Sir, it says that the Act 2003, it says that whereas the Article 199 of the 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, which law the Act is referring to, which law the Constitution is pointing finger to? Was there any law at that time? No act. Because the rules were framed, notified in 1980, and has been made in 2023. So which law they were referring to? They were not at that time. Because I think the constitutional amendment has been made
by unconstitutional means. शक्ल बदल गई है constitution. Quite possible, but this Article 199, your lordship uses the word law. Law can include ordinances, rules. It will include the previous Supreme Court rules also, because the previous Supreme Court rules were framed in 1956, and they, under Article 268, continue as existing law. So they were also law, and they continued till they were changed and repealed in 1980 by the present rules. So at that point in time, there was no law which actually limited the power of the guidance for making rules. It could be, but as I said, maybe on my reading of entry 55, there may be some law which can provide for these practices and procedures within very narrow limits, but subject to the overarching constitutional principle that nothing can be done in that law that impinges upon the independence of judiciary. And the Baz Mohammed Kakad case is squarely applicable there. There the power of the Chief Justice to constitute benches was impinged upon and it was struck down. Mr. Bandraji, this court can revisit its own judgment by larger bench. So is it not equal to the appeal? You are overruling the judgment of 3-member bench by 5-member bench. So it is not sort of appeal. No, my lord. And the law, which according to you is a judge law, whether judge law cannot be managed through rules or through enactment. My lord, there are twofold answer to that. My lord, appeal is different because appeal determines rights between the parties themselves. It sort of does away with the concept of res judicata. If there is no appeal, the judgment becomes final, the rights are determined and res judicata applies. If you take the matter into appeal... So it means that you are against the right of appeal provided to the general public. Say the Supreme Court can exercise that right, but the general public cannot. No, I'm not saying that. I'm saying your power, your lordship's power to overrule previous precedent will not disturb the rights of the parties. The rights are determined. Your overruling is only on a point of law. You will declare the law, you will overrule a previous judgment. The Doso case was overruled in Asma Jilani, and in Sindh High Court Bar, all the previous validating judgments were overruled. The rights of the parties are not affected. If this power is structured, what effect it will have? Well, because the difference is, once the judgment becomes final, even if the judgment is wrong, and even if it is later overruled in a subsequent case, the rights of the parties become final under the judgment. That's the doctrine of res judicata. What your lordship is alluding to is the doctrine of stare decisis. A larger bench can overrule the law declared by an earlier bench, but it cannot upset the rights that have been determined inter partes. Even the legislature can't do that. Even the legislature cannot undo the judgment, can declare a judgment of the court to be of no effect. The legislature can change the law for the future. It can take away the basis for the judgment, but it cannot simply say this is what they did in the NRO case. In NRO, they declared certain judgments to be void simpliciter, and that was struck down in Mubashir Hassan's case. It means by overruling our judgment, we ourselves consider that judgment was wrong. Yes. Therefore, there must be something to revisit it. Yes, my lord. The Parliament said, okay, do it in proper manner through the Act of Parliament. Well, but that's a question of appeal. Appeal is different. Appeal is that the dispute is between A and B. A and B rights have been determined in the original proceedings, and then they go up in appeal and those rights are redetermined by the appellate court. The overruling doesn't take place on that basis. Overruling takes place on the basis that the earlier judgment declared the law incorrectly, and the law is now being rectified. So the rights of the parties, even res judicata applies even if the judgment which determined the rights is wrong. It will amount to discrimination. For once, at one time, the Supreme Court says this is wrong. On the other hand, Supreme Court said no, this is right. My lord, but then that raises the problem of finality of judgments, because we are dealing with a human institution which is the court system. You have to have finality of judgments, finality of cases. Otherwise, why not have a second appeal then? Why not have a third appeal then?
problem, my lord, your lordship quoted this in Mr. Uzair Bandari, I must Learned compliment counsel. you on 2 counts. My lord. One, your extreme patience and good humor to address very different questions from all sides of the bench. And the second is your thorough being fully prepared in this case. I'm grateful. Do you want to add anything? My lord. Because our questions will never stop. I must draw. If you want to add something. Yes, my lord, let me allow me to address the question. So it's always a pleasure to hear someone who is articulate to there are cobwebs in our minds as well to clear them up. My lord. But then we are taking away from your submissions. You want to add something? My lord, I'll just ask for 10 minutes to address the question of appeal. Learned counsel, just one last question. My lord. You represent a very, it's a political party. Maybe tomorrow it is in majority in the parliament. From your arguments, what I've gathered is that you actually do not repose your confidence in the parliament. What you have said is, as I've understood, that this is a very good law, but in future the parliament may make a law which may have effect on the independence of judiciary. There is no fundamental right that the political party is, argued that is enforcing. They say it's a good law, it should happen, but their apprehensions have been expressed against the parliament. So, do you think it's a matter which should have in the first place been taken up under Article 184(3)? Because everyone, and kindly if you can cite any example in any jurisdiction where a good law, a law that actually ensures access to justice, may have been struck down by any court. My lord, I'll do that. The Indian Supreme Court did that in the Advocate on Records case 2016, volume 1, 2016 volume 1 SCC, volume 5 SCC page 1. Their National Judicial Appointment Commission had been reconstituted by the 99th Amendment of the Constitution. They put in experts from the public to help and to sort of advise in the process of appointment of judges. That law was struck down by the Indian Supreme Court. A constitutional amendment was struck down because it violated the independence of judiciary, even though, and this is most critical, and I'll... Learned counsel, Learned counsel, here in this case, it is actually promoting and advancing the independence of judiciary. It is not. My lord, I am not for a moment conceding that this is a good law. As a political party, it is not a good law. This is your stance. My lord, it is not my stance, and I am not conceding that it is a good law. It is half-baked. It creates more problems than it solves. It's being dressed up as a good law. For example, if your lordship actually decides to turn the autocrat that your lordship just said we were, where is the provision in this act which says that how will the cases be fixed? Section 2 simply says the committee will constitute benches and allocate to them. What if your lordship decides that despite that allocation, I am not going to fix any case? We can frame the rules. We can frame the rules for that. ये देखिए वो मेरे दोनों तरफ दो फरिश्ते जो बैठे हैं वो मुझ पे नजर रखेंगे, आप फिक्र ना करिए। इधर और बंदारी साहब एक कमिटमेंट तो आप फिर कर ही रहे हैं ना आज कि जब आप की पॉलिटिकल पार्टी अगर कल इलेक्शन जीत जाती है तो पहला बिल आप पार्लियामेंट में इसको रिपील करने का डालें। माय लॉर्ड, मैं तो ये कमिटमेंट नहीं दे सकता। अब इतना बुरा कानून है, फौरन रिपील करवा लीजिएगा। हम फिर पुराने उस पे चले जाएंगे। ये आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये तो अजीब बात है। इतना बुरा कानून है मगर मैं ये कमिटमेंट नहीं दूंगा। नहीं, हो सकता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट कर दे। शायद आपको सूट करे, अगर अपील दे दें इसको तो शायद सूट करे, इसलिए मतलब मैं तो देखिए ये बात असूली बात है। कल क्या होगा जी वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई भी नहीं कह सकता। चलिए अब देखा नहीं, लेट्स वाइंड इट अप। मैं सर ये जो मैं आपको my lord the judgment I referred in para 990 of that judgment there is very detailed discussion on how the collegium system in India has totally destroyed matters. There your lordship know in India the power of appointing and recommending judges for appointment does not vest in the chief justice, it vests in the collegium of 5 judges.
And this para 990 at page 689 deals with the problems that the collegium system caused. And that goes on and on. Favoritism, nepotism, collegium abuse तो of यहाँ पे power. भी है जी. But they nonetheless said, Judicial we are Commission not of letting the Pakistan, parliament Judicial interfere in Commission our- and Parliamentary Committee भी तो collegium ही चल रहा है ना, तो वो Exactly. against the independence of judiciary नहीं है नहीं, Parliamentary आप- Committee. नहीं, वो आपने अपहोल्ड कर, मैं बात और कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ, जो माय लॉर्ड ने सवाल पूछा था कि इधर Learned Counsel इंडियन सुप्रीम कोर्ट in- ने एक्सेप्ट किया कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं कोलिजियम सिस्टम में, हम बाहर फिक्स नहीं करने देंगे. माय लॉर्ड, विद रिस्पेक्ट, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स जो आपके जुरिस्डिक्शन में है वो बाहर वालों को सॉल्व करने देंगे, फॉर मी दैट ब्रिंग्स बैक सेलस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी. हर मार्शल लॉ भी इसी बेसिस पे लगा सुप्रीम कोर्ट के कि 3 पार्लियामेंट जजेस काम हैं, नहीं कर चीफ रही, जस्टिस एंड हम 2 मार्शल लॉ जजेस, लगा देते हैं. चीफ मार्शल लॉ भी तो जस्टिस इसी के एंड 2 लगे. सीनियर जजेस इन द कॉलेजियम. तो ये बाहर वाला कौन है यहाँ पे? इधर सर, यहाँ पे अगर कमेटी है तो बाहर से कौन आ रहा है? सर मैं और बात कर रहा हूँ. कॉलेजियम सिस्टम मैं तो- अच्छा नहीं होता ये है, बताइए, उसमें नुकसान होता है. as a political party, do you support the powers vested in the Chief Justice No. and not in 3 judges? No, I'm saying it should be maybe more than 3 judges. No, But Learned Counsel, I'm more than not in Learned. favor. I'm not saying that the No, Chief Learned Justice Counsel, should be you have to be one. very clear. Bhandari Sahab, Do you support the 170 previous system where the Chief Justice had absolute discretion? I don't support that. So it's a good law. It is not. Secondly, It is not. My lord, I don't concede it's a good law. Bhandari Sahab, Because from this extreme, you don't necessarily go to that extreme. You go step by Learned step. Counsel, that Bhandari is, Sahab. you are questioning the wisdom of the parliament as a political party. The question Tomorrow, here your is the client process. would be in the parliament. If tomorrow they do take my advice before enacting law, I will advise them to enact a better law than this. This for me is not a good law. भंडारी साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है उसमें है चीफ जस्टिस एंड जजेस. सब जज. जो चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं 191 में कि वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपने जजेस को देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे द लॉ कुछ इनको ये अथॉरिटी मिल जाती है तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है अमंग्स द जजेस अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. बाज मोहम्मद काकड़ केस में एग्जैक्टली यही हुआ था कि स्टैट्यूट के थ्रू चीफ जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को चेंज करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा नहीं हो सकता. मेरी तो सबमिशन ही ये है, मैं बिल्कुल एक मुतलक चीफ जस्टिस के हक में नहीं हूं. मिस्टर भंडारी, चीफ जस्टिस के पावर कहीं डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन? कई जगह है. फॉर एक एग्जाम्पल जगह बता दें. नहीं वो सर जैसे 140 में कि चीफ जस्टिस आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर सकते हैं. As far as the working of the Supreme Court and the constitution of the benches, The subject matter of this act, my lord is asking, yes, of course, the chief justice powers are mentioned in various provisions. Regarding the subject matter of this case, is there anything can be Not utilized? except the constitutional 191 convention. में- That appointment of 191 that constitution of benches is your prerogative. You see 191 में इसीलिए रूल मेकिंग पावर दी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कमिटीज, रिव्यू, रिविजन्स, व्हाटएवर, उसके जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाए. एंड अ फुल कोर्ट इन 1980 डिड मेक दोज रूल्स, और उससे पहले भी रूल्स बने थे जो आई मीन व्हिच फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए रूल मेकिंग पावर दी गई. सो लेट्स मूव ऑन टू द अपील बिट. My lord, the appeal, and I'll try it. My lord, there is one direct precedent which deals with the question of appeal and such similar matters, which is Sabir Shah's case. PLD 1995, Supreme Court 66. Now what happened in that दोबारा case? बताइए PLD. PLD 1995, Supreme Court, page 66. Now, my lord, what had happened? ये दिखाइए जी किताब. What's the contention? PLD 1995. Contention क्या आपकी? जी मेरी इस केस में ये था, the Political Parties Act was amended, and in the case of defection, the power was conferred, power of adjudication was conferred on the Election Commission.
in terms of Article 63(2). And appeal against that order of the Election Commission was provided direct to the Supreme Court. And that appeal was struck down by this Honorable Court in this case by saying that where the original forum, Article 63(2), is created by the Constitution itself, then an appeal, and the Constitution does not provide a further remedy, then an appeal against that cannot be provided by ordinary legislation. ये कौन सा paragraph है? This is, first of all, this is Justice Sajjad Ali Shah, his lordship as then was the Chief Justice. He wrote for the majority. There were some dissents also. This is para 14 at page 99. What was the reason given for it? Because the sub-constitutional legislation cannot in effect amend a constitutional provision. Did they discuss 55? They did not. There's no discussion of 55 here. Para 14 पढ़िए. Para 14, I read the first 4 lines. Determination of question of forum. इससे पहले, Your Lordship may kindly see page 105, where the provision in question is reproduced. 105. जी. If a member of a house. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी की बात होगी ना, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी तो 55 की और किसकी डिस्कशन की? 41 की, बिकॉज इलेक्शन से रिलेटेड था, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 40 एंट्री 41 से आया था. If a member of a house having been elected as such, a candidate or nominee of political party, or having been elected as such otherwise than as a candidate or nominate of a nominee of a political party, and having become a member of a political party after such election, defects or withdraws himself from the political party, he shall from the date of such defection or withdrawal be disqualified from being a member of the House for the unexpired period of his term as such member, unless he has been re-elected at a by-election held after his disqualification. 2. If any question arises whether a member of a House has become disqualified under subsection 1 from being a member, the question shall, on a reference by the leader of the parliamentary concerned, be determined by the Election Commission. 3. An appeal against a decision of the Election Commission under subsection 2 shall lie to the Supreme Court within 30 days of the decision. So this, then Your Lordship may kindly... Entry 41 में तो कोई बार नहीं था, उनको तो 55 में ही देखना चाहिए था. 55 इसमें डिस्कस नहीं. So 41 में क्या प्रॉब्लम? 41 तो इलेक्शन से डील करता था, तो आप क्या तो आर्गुमेंट है कि उसको डील करते हुए you can provide all the appeals and everything. नहीं, but मैं ये कंपटीशन का यहाँ पे और बात आ गई. मैं यहाँ पे तो ये है कि आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जैसे कि इलेक्शन 63(2) में है या 184(3) में है, उसके खिलाफ आपको अगर अपील देनी है तो वो तो एक्सप्रेस आपको पावर चाहिए बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. 184(3) में भी नहीं है और उन्होंने कहा जी 63(2) में भी नहीं है, तो वो तो उस 55 तक आप पहुंचेंगे ही नहीं क्योंकि एक्सप्रेस ऑथराइजेशन ही नहीं है. अनलाइक रीडिंग के मुताबिक इन माय हम्बल सबमिशन 2043 इज डिफरेंट. वहां पे और कहा कि 41 में पावर नहीं है. नहीं, उन्होंने तो ये पढ़ लेते हैं. उन्होंने ये कहा है कि जी वो फोरम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही फोरम दिया है और उसके खिलाफ रेमेडी नहीं दी तो फिर आप उसके खिलाफ रेमेडी थ्रू सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन नहीं दे सकते. ऐसे ही बस कह दिया. I think that's. I mean, you can't amend the constitution. Anything more? Or ordinary legislation. Anything more? दूसरा फिर इस पे आप देख ले सर पैरा 34 जस्टिस फजल करीम्स ओपिनियन at 259. इसी केस में. इसी केस में. And then the discussion by in para 34 page 34, then 40 to 43. साबिर शाह केस है ना? साबिर शाह केस. This is the separate opinion who agreed by Justice Fazal Kareem. Para 30. Para 34. हाँ. And then 40 to 42. 40 to 42. 242. 262 to 263. Khatam? This is Justice Fazal Kareem. Then, my lord, just a couple of more things. My lord, the other judgment in which your lordships have held that an appeal directly, this is the Review Act judgment in which your lordships have held that the review that was, power of review that was given was in effect an appeal, and no appeal could be provided in 184(3) through a sub-constitutional legislation. This is Ghulam Mohiuddin versus Federation of Pakistan. I've already mentioned this. My lord, then very quickly, just
your Lordship have also seen that this appeal provision, apart from the fact that 184.3 does not contemplate an appeal, your Lordship will see that Section 5, subsection 2 says, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of Article 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act, provided that the appeal under this subsection shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. So the right of appeal is being treated retrospectively, and there is no starting point mentioned for this right. So, according to my knowledge, the first case under 184.3 was Manzoor Ilai's case. So technically an appeal can be filed against in that also. Any number of cases, all the cases that, of suo motu jurisdiction, your Lordships will be inundated by thousands of appeals because of this. So this is the floodgates argument. Manzoor Ilai case कौन से Manzoor Ilai case कौन से year है Manzoor Ilai? 75 Supreme Court. 75. और कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं दे सकते हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली अपील की रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। की जा सकती है अगर कॉज ऑफ एक्शन अलाइव हो तो उसकी लिमिटेशन आप कर सकते हैं। जो जजमेंट्स पास्ट एंड क्लोज्ड और फाइनल हो गई हों उनको आप रीओपन नहीं कर सकते। ये दो चीजें जी, ये जो रिव्यू वाली जजमेंट पे भी जी ये पैरास 55 और 56 में डील किया गया। And then, my lord, there is a US Supreme Court judgment which is squarely on point. This is Plout versus Spendthrift Farm. This is 131, Lawyers Edition 2nd, 328. This is exactly on point, where judgments of lower courts had become final, appeals had become barred, and much later, there was a law which said that all of those cases could be reinstated within a certain period of the promulgation of the Act. And the US Supreme Court struck it down as something which impinged on the separation of powers and judicial power. So this is something for you. You have argued on the point of the appeal and the substantive right, but what about on the point of practice and procedure, and whether the word law gives competence to Parliament read with entry 58? आपने उस पर नहीं बताया what your thoughts are. My submission, Entry 58 के ऊपर what do you say on entry 58? No, the power to make law on practice and procedure does not confer any power to create an appeal which has been settled, which it is settled law is a substantive right. No, whether Parliament can make law on practice and procedure. That was the question that has been left unattended so far. No, in my humble opinion, on the subject of practice and procedure per se, Parliament cannot. Cannot. Parliament can make laws on other subjects if it is empowered under the body of the Constitution, and then in that limited area, it can provide practice and procedure. So your answer to both questions is that Parliament cannot make law with respect to creating this right of appeal through ordinary legislation. It would be a constitutional amendment, if at all, and secondly, practice and procedure पे भी law नहीं। जी। आप ये बताते हैं वो कौन से मामलात हैं? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँ तो खत्म कर लें। खत्म करेंगे। वो कौन से मामलात हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है, या तो हमने कह दिया नहीं कर सकती, तो वो आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि ये मैटर इसमें तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और इस मैटर में पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। माय लॉर्ड, ये कहना कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में लॉ नहीं बना सकती इज नॉट करेक्ट। पार्लियामेंट जिन चीजों पे भी लॉ बनाती है वो अल्टीमेटली एज द एपेक्स कोर्ट आप उससे डील करते हैं। अगर बना सकती है, क्या हर्ज है कि वो सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कंट्रोल ना करे? नहीं, वो कंट्रोल थ्रू द जजेस, नॉट थ्रू द पार्लियामेंट। सर, जब देखिए पार्लियामेंट जो भी कर सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में रह के कर सकती है। जहां पार्लियामेंट ने खास कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्पेसिफिक पावर देनी थी वो दे दी। अब ये तो एक पॉलिटिकल डिबेट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फर्दर उसमें कुछ करें, दैट कैन बी डन, बट अभी तो वी ऑल हैव टू ऑपरेट विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Every law that is enacted in this country, be it provincial, be it local, be it federal,
Your lordships have jurisdiction over it. Your lordships are the apex court. A matter relating to company law comes before my lord. A matter relating to property tax in any province comes before my lord. As the apex court, all that laws are laws that your lordships deal with. Not that the Supreme Court is being cut out. Here, the problem is that that an external agency is coming in and telling you what to do and how to do. That's the problem. An external agency, and this is what the Indian Supreme Court said. Let's not denigrate Parliament by calling it external agency. Let's call it the Supreme Court. External to the Supreme Court, only in that sense. Because मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे. मैं पहले एक कन्फेशन कर लूँ. जो अभी मैंने आपको यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी है, मेरे एक यंग कॉलीग हैं शहरियार रियाज के नाम से, ये मुझे उन्होंने बताई थी एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम. मेरी रिसर्च में ये नहीं आई थी, मेरे एक यंग कॉलीग ने दी, मेरे कॉलीग ने बाद में निकाली थी. सो आई जस्ट वांट टू एक्नॉलेज. आप ऐसा कीजिएगा, आप उनकी तनख्वाह फौरन बढ़ा दीजिएगा. सर वो मेरे लिए काम नहीं करते. नहीं ये फिर आप उनको पैसे दे दीजिए, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन. हमें ये बात ना बताएं. अच्छा नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड एक्नॉलेज करना चाह रहा था. द फाइनल पॉइंट जो मैं इस पे करना चाह रहा हूँ, नहीं ऐसे सूखा एक्नॉलेजमेंट नहीं चलेगा. क्या सर? मेहनत भी करें. आप कह रहे हैं बस एक्नॉलेज कर लिया, चलो भाई तुम्हारे एक्नॉलेज कर लिया. नहीं, अब तो आपने एक्नॉलेज कर लिया तो आप उसको बाकायदा पैसे दीजिएगा इतनी मेहनत के. सर मैं दे दूंगा. मैं आई एग्री. आई विल बी मोर देन हैप्पी. डन सर, डन. Final point, and this is the point that my Lord Justice Mandokhel raised on the last hearing and even today. How is an ICA competent in terms of Article 199? Why doesn't the same principle apply there? My Lord, an intra-court appeal has a very interesting history. I've dealt with it at pages 15 to 18 of the concise statement that I filed yesterday, CMA 8351. But if I can very quickly just sort of Lord, I'm sorry to interrupt. With your lordship permission, we have filed concise statement. नहीं ये बात कर लें. Just with your lordship. I have to leave for Lahore. माइक में बोलने. Lord, I have to leave for Lahore. I have given the statement. हमें बहुत खुशी हो रही है. आपको इजाजत है, फाइल कर दीजिएगा. थैंक यू. Well, the origin of the intra-court appeal is in the letters patent of the Lahore High Court, which were framed in 1919. Now, in the letters patent, clause 10 allowed for. ये आपने बात तहरीर कर दी है. जी कर दी है. तो अब काफी वक्त हो रहा है, हम पढ़ लेंगे उसको. ठीक है. आप pages 15 to 18 मैं सिर्फ ये. आप फिक्र ना करें, आपका हर लफ्ज मैं तो पढ़ूंगा. कम से कम मैं ऐड कर देता हूँ. I'll be very grateful. आपसे आखिरी जब हो जाए फिर मैं सवाल करना चाहूँगा. आखिरी एक क्वेश्चन उसी के बारे में मजीद करता हूँ. आपने ये जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत इंटर कोर्ट अपील दी गई, लेकिन आर्टिकल 199 में यही बात है कि नो ऑर्डर कैन बी पास अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट. तो एक तरफ तो हाई कोर्ट अपील सिंगल जज ऑर्डर करता है, डिविजनल बेंच बैठ के उसके ऑर्डर को सेटिस्फाइड या अपहेल्ड करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट. क्या इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं. आर्टिकल 199 starts off by saying it is subject to the constitution. So 199 is subject to the constitution. The constitution itself saves the law reform ordinance in article 268. Said 199 said no order can be passed against the judgment of the high court. No, my lord, but it is subject to the constitution itself. So the constitution saves the relevant laws, saves the letters patent as well as the law reforms ordinance, and then article 275, because law reforms ordinance came about in 1972 when there was no constitution. You mean that the appellate forum provided by the statute in respect of constitutional provision in High Court is correct, but here in Supreme Court is not? No, my lord, it is not. It is not as simple as that, because the very constituent document of the High Court. I think you've stated. Have you concluded or no? Have you? Learned Counsel, you've very aptly explained your submissions in your written submissions. I've gone through them. I think when my brothers, colleagues, they find time, they read it, I think they'll understand. ठीक है, मैं बिल्कुल जी मैं इसी तरह उसमें जो statutory appeals जो my Lord Justice Mansoor Ali Shah
नहीं, मगर हमने आपकी इतनी तारीफ करी, आप हमारी थोड़ी तारीफ कर देंगे। इतना पेशेंटली सुन रहे हैं आपको। सर आपने इतना पेशेंटली सुना है कि मेरी तो टांगें थक गई हैं। ओके, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। अच्छी बात है, हल्की फुल्की तरीके से थोड़ा लाइट भी रहना चाहिए माहौल। बिल्कुल होना चाहिए जी। मैं सिर्फ लास्ट ये बात करके आई विल फिनिश। जितनी भी सर स्टैट्यूटरी अपील्स एटलीस्ट मुझे मिली हैं, वो सब की सब जस्टिफाइड और बेसिस पे एक्सेप्ट द कंपटीशन एक्ट। फॉर एग्जांपल लीगल प्रैक्टिशनर और काउंसिल्स एक्ट में अपील है टू द सुप्रीम कोर्ट। ना वो एक्ट, उसमें भी अपील है, उसमें भी है, सेक्शंस 48 में है, 50 में है। डिसिप्लिनरी कमिटी के ऊपर जी सुप्रीम कोर्ट है। जी सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा वहां पे इसलिए है, देखिए आपसे हमेशा कुछ नई चीज सीखते हैं सर। वहां पे इसलिए है कि वो उस 1973 में आया था जब 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट कर रहा था, और 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 188 था जो कहता था सच अदर जुरिस्डिक्शन एज में बी कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय लॉ। तो वो उस बेसिस पे जस्टिफाइड है। प्रोटेक्ट हो गया फिर जी, प्रोटेक्ट हो गया वो और फिर वो बाद में वो sort of 268 और 275 के थ्रू वो चलता रहा। फिर सर दो है, एक तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और मोतसिब ऑर्डर 1983। इन दोनों में अपील टू दी कंपनीज ऑर्डिनेंस तो रिपील हो गया, बट टू दी व्हेन इट वाज अलाइव or extant, it provided an appeal. Now, both these laws were made when the Constitution was in abeyance, in 1983 and 84. And in fact, if you are not कितने आराम से ये बात कर देते हैं, when the Constitution was in abeyance. नहीं सॉरी, देखिए ये हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी इन abeyance, फुल स्टॉप। आई होप सो। तो अगर कोई ये कह भी दे उससे क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन इन abeyance हो गया, माशाल्लाह। एक नई इस पे हमने बहस शुरू कर देंगे, लेक्स पॉपुला है। नहीं अब मैं आपको सवाल आखिरी अब खत्म करने पे मैं एक सवाल मैं बस एक और मेरा रह गया जी। सो ये दोनों जो लॉज हैं जी, ये तो दे वर फ्रेम्ड व्हेन द मार्शल लॉ वाज इन अपील। अगेन वो फिर रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और फिर 270A में वो सेव हो गए। फिर कंपनीज एक्ट 2017, एक्चुअली द प्रोविजन दैट इट प्रोवाइड only for a petition for leave to appeal, and I don't see what sense it makes, because petition for leave to appeal to in any event has to be determined by the Constitution. Then is the Elections Act. Election Act, Section 155 provides an appeal to this court against orders and judgments of the Election Tribunal. Now, again, I'm not defending it. All I'm saying is that may be justified on the basis of Article 225, which is similar to, or can be read similarly to, Article 6.3. It's a separate, it allows for the creation of a separate regime outside the normal courts, and hence it can be justified on that basis. My Lord, Competition Act, even though I will not, as my Lord the Chief Justice said, because it's a sub judice matter, better you made your point, ठीक है जी। उसमें सिर्फ ये कि वहाँ तो there is the appeal to the Supreme Court is not even against an order of the High Court. It's an appeal against a competition appellate tribunal. So एक ट्राइब्यूनल क्रिएट किया गया और उसके ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अपील दे दी गई है, बट वो फिर इन एन अप्रोप्रिएट केस आप देख लेंगे। माय लॉर्ड, द फाइनल पॉइंट ऑन दिस, इवन इफ योर लॉर्डशिप आर इंक्लाइंड टू सस्टेन द लॉ, a question was posed, I think, by my lord on the previous hearing. What will happen to all the benches and all the amendments that have been passed? My lord, in that eventuality, my submission would be that your lordships should or to invoke the doctrine of de facto, as was done in the case of Meher Ali, PLD 1990. As was done in the case of 1998 Supreme Court. 1998 Supreme Court. 1445. PLD. PLD 1998. 1445. ये किसका केस है? This is the Meher Ali versus Meher Ali, yeah, okay. जी, उसमें मैंने होल्ड ये किया इस कोर्ट ने कि जी लॉ गलत था, उसके तहत ट्राइब्यूनल्स गलत बने, लेकिन जो कुछ हो गया अंडर द कवर ऑफ अ लॉ हुआ, तो इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी जो कुछ हुआ वो अंडर द कवर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हुआ, देयरफॉर एवरीथिंग ऑट टू बी सेव्ड। माय लॉर्ड, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। भंडारी साहब, उसमें तो पीनल कॉन्सिक्वेंस थे, इसलिए उसमें ये कहा गया था। जी जी, इसे अली वाले केस सेव कर लिया। हुई थी ना? जी जी जी, तो सजाएं थी वो उन्होंने कर ली। थैंक यू माय लॉर्ड, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। आपकी साइड से सब लोग खत्म हो गए ना? माय लॉर्ड, हाँ, मेरा एक पिटीशन है माय लॉर्ड। अच्छा, एक सेकंड भंडारी साहब जाइए, नहीं मेरा सवाल था वो आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते। देखिए आप हमें अमेरिका ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, जरा आइन जरा खोल लीजिए, पहला सफा पढ़ लीजिए उसका।
पहला सफ़ा पहली इबारत इसकी पढ़ी है, My lord. शुरू कीजिए। Whereas sovereignty over इससे ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। ये Bismillahir-Rahmanir-Rahim, in the name of Allah, the Beneficent and the Merciful. Preamble. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust. इसका उर्दू तर्जुमा आप कर सकेंगे या मैं कर दूं आपके लिए? सर, हाकमियत आला अल्लाह ताला में है, पूरी कायनात पर तन्हा अल्लाह ताला ही की हाकिमियत और उसका तफवीज़ करदा इख्तियार एक मुकद्दस अमानत मुकद्दस अमानत है। मुकद्दस अमानत। अब आर्टिकल 2 जरा पढ़ लीजिए। इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 2A पढ़ लीजिए। जी। 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. पहला सवाल आपसे, क्या कुरान शरीफ से हिकमत ले सकते हैं ये फैसला करने के लिए या नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। तो कुरान शरीफ में कोई ऐसी आपके ख्याल में कोई है जगह जहाँ के मुशावरत की बात की गई हो? My lord, I will not. मैं आपको मदद कर देता हूँ। सूरह आले इमरान में जो 3rd सूरह ऑफ द होली कुरान 159 वर्स में ये स्पेसिफिकली है कि आप मुशावरत से काम कीजिए, और यही बात दोबारा फिर कही गई है सूरह नहीं ये हो गया, ये है सूरह शूरा में 48 वर्स में कि अब अंग्रेजी में इन म्यूचुअल कंसल्टेशन सेटल योर अफेयर्स या मशावरत के साथ करें। ठीक। तो अगर हम रहनुमाई कुरान शरीफ से लें और अमेरिकन केसेस से ना लें, ठीक, और अगर मैंने तो खुद ही अपने आप को कह दिया कि मैं मुशावरत करना चाहता हूँ, मैंने अपने दोनों कोलीग से मुशावरत कर ली और बड़ी खूबसूरती से हुई, हमारा कोई ये ना समझिए कि 2-1 कोई आ रहा है, हमने बाई कंसेंट से फैसला कर लिया, ठीक है, नहीं तो बड़ी खूबसूरती से हो गया। तो अगर ये कानून भी यही कह रहा है कि आप मुशावरत कर लें अपने जो उल्टे लोग बैठे हुए हैं उनसे, और ये तो हो गया वो वाला पहलू इसका कानून का कि बेंचेस वगैरह की तश्कील कैसे होना है। दूसरे पहलू हैं एक रिव्यू का, उस पर आपने कोई ख़ास बात नहीं की। तीसरा पहलू वो है अपील का, जिस पर आपने काफ़ी कुछ ज़ोर दिया है। तो एक और पहलू ये है कि अगर अहम आइनी कानूनी नुक्ते हैं तो 5 मेंबर बेंच बन जाए, ठीक है, तो मैं कहूँगा इसमें क्या बुरी बात है। और एक और है कि अगर 184(3) का क्योंकि हक अपील का नहीं दिया है, उन्होंने आर्टिकल 10A का भी जिक्र कर दिया है कि अपील का हक तो अल्लाह ताला भी कंडेम नहीं करेंगे, वो भी पूछेंगे। तो वो अगर एक अपील का हक मिल गया तो किसी को नुकसान, फिर वही आ जाती बात। अब मैं दूसरी उसको मद्देनज़र रख के कर रहा हूँ ये बात को, कुरान शरीफ को मद्देनज़र रख के, और हम जिनको समझते हैं मुसलमान के जो हम अपने प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात करें तो वो हर काम मुशावरत से करते थे। तो मुशावरत पे करने में कोई ऐसी क्या बात पार्लियामान ने हम पे हमला कर दिया है? उन्होंने कहा जी आप अकेले ना करें जी जस्टिस, आप बराए करम मुशावरत से कर लें, क्योंकि ज़्यादातर अटैक आप लोगों ने जो किया है वो सेक्शन 3 का अटैक किया है। रिव्यू पे आपने नज़रअंदाजी की है और ना ही वो तो की है अपील की बात, मगर आपने बहुत बाकायदा दोनों तरफ के दलाइल भी दे दिए हैं। तो इस पर तो इख्तियार की बात आती है, मुशावरत की बात आती है। कोई हम किसी के इख्तियार खींच नहीं रहे, मुशावरत करवा रहे हैं सबसे। मेरी सिर्फ बिल्कुल ठीक आपने कहा सर, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, नहीं मगर इसको हम रहनुमाई ले सकते हैं कुरान शरीफ से। मैं कह रहा हूँ आपने ली, आपने जब 1980 में रूल्स बनाए तो सारों ने बैठ के मुशावरत नहीं, ये अभी हमें नहीं पता, देखिए हमें नहीं पता मुशावरत हुई है नहीं हुई थी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जी पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है, आप जरूर करें, आपको करनी चाहिए, और आपके पास शायद वही बात आ जाती है ना, सब पावर अगर आपका मूड होता है आप पे, फिर ये मुझसे तो आप एक तरह से वो कर रहे हैं कि अगर आप बेहतर समझते हैं तो खुद कर लीजिए। पार्लियामान का कहना कि आप मुशावरत कर रहे हैं गलत है, मगर यही बात तो कुरान शरीफ भी कहता है। वो ये नहीं कहता है अगर चीफ जस्टिस समझते हैं मुशावरत कर लें, कुरान शरीफ पाबंद करता है कि मुशावरत करिए। मेरे ख्याल में आइन भी आपको पाबंद करता है, मैं बेहतर समझते की बात नहीं कर रहा, आइन आपको पाबंद करता है। आप इस इदारे के सरबराह हैं, आप पाबंद हैं
कि इस इदारे को उस तरह से चलाएं जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि वो पावर कोर्ट की है, आप अपने पास रखें। कोर्ट से इनफराद पे फर्क, आपने कोर्ट और इनफराद को दोनों को एक बयान करते हैं, मगर जिस तरीके से मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि दूसरे लोग नहीं शायद ये बात करें, मैं इसीलिए अपने आप को पेश कर रहा हूँ कि अगर मैं कल किसी से नहीं मशावरत करूँ, अपनी मर्जी चलाऊँ, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है, कैसे कर सकता है? आप आज तो आप तैयार है ना सर, आज आप फुल कोर्ट मीटिंग में ये तय कर दें कि जी कोई भी तीन, क्यों करूं? नहीं सर, तो मैं अपने इख्तियार क्यों कम करूं? नहीं, तो अभी तो आपने सर खुद कुरान शरीफ का हवाला दिया। ये देखिए, वो मेरी अपनी मर्जी वाली बात है ना। नहीं सर, मैं तो आपकी अपनी बात पे कर रहा हूँ। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं ना। देखिए, कानूनी और आईनी बातें हो रही हैं, मेरी मर्जी की बात नहीं है। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूँ मैं नहीं करता हूँ, बस खत्म हो गई बात यहाँ। नहीं, मैं तो मशवरे के बाद भी ये बात कह देते कि नहीं करता हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सर जरूर करें। मैं ये कह रहा हूँ सर कि और का कहना कि आप मशावरत करो, ये बुरी बात है आपका, ये बुनियादी बात है। आज वो ये कह रहे हैं, तो कल जो बात करेंगे जो इतनी खतरनाक होगी, यकीनन आप जैसे वकील आएंगे और हम उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, और मैं उससे ऊपर वाले एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, मैं भी उसी की कर रहा हूँ, जिसमें आइन शुरू ही होता है उसी बात। मैं भी उसी पे कर रहा हूँ सर। आप पे पाबंद है, आप सबके साथ बैठ के मुशावरत करें। और ये आपने एक चीज जो इस कोर्ट से वॉइसेस आई कि सिस्टम को रिफॉर्म करें। सर, माय लॉर्ड जस्टिस मंसूर अली शाह का सेपरेट नोट आया, SMC 1, जस्टिस अतर मनेला का आया, आपका आया। आप सब ने कहा कि हम 191 के नीचे रूल्स चेंज करें। तीनों में जो फुल बेंच की जजमेंट है 2022 सुप्रीम कोर्ट 306, उसमें कहा कि रूल्स के थ्रू करें। आपने तो अपने ऑर्डर में नहीं लिखा कि पार्लियामेंट को बना दे। इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं। तो अब करें ना, अब क्या रोका हुआ है? भंडारी साहब 15 बैठे हैं। भंडारी साहब इसको इस तरह कर लेते हैं, स्पेशल साइड पे कर दे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको इस तरह कर लेते हैं भंडारी साहब की एक्ट भी रहे, जो बकाया रह जाए वो हम रूल्स में देख लेते हैं, जो काम रह जाए रूल्स में करें। नहीं सर, आप सारा कुछ रूल्स में ही लिखें सर, मेरी गुजारिश है। केसेस की फिक्सेशन का भी लिखे, कॉज लिस्ट का भी लिखे। कॉज लिस्ट सर सैटरडे को इशू है, हमें पता ही नहीं होता सैटरडे तक, ना कोई पर्सनल कमिटमेंट ना कोई प्रोफेशनल। 1 महीना पहले कॉज लिस्ट इशू करें। चीफ जस्टिस की मर्जी है जब इशू करें। सर, मैंने तो चीफ जस्टिस को भी लिखा है सर, मेरा खाता है। उनकी मर्जी। भंडारी साहब, ये एक हम जरा मशावरत आपस में कर रहे हैं कि इसको हम आज ही चलाएं या किसी और तारीख को रखें। भंडारी साहब, हम चाहेंगे और तवक्को रखते हैं कि जब आपकी पार्टी, पटिशनर की पार्टी पार्लियामेंट आए, वो न सिर्फ पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाए, हमें भी अगर कोई गलती है वो भी दुरुस्त करे, लेकिन वो पार्लियामेंट करे। माय लॉर्ड, मेरा सर्टेनली यही मशवरा होगा। योर लॉर्डशिप कैन हैज माय वर्ड ऑन इट प्रोवाइडेड आई एम कंसल्टेड। ग्रेटफुल। आज क्या ट्यूसडे है ना, तो हमारी लिस्ट निकल, किधर गए वो? आइए अटॉर्नी जनरल, आप किधर चले गए? हाँ, कल की लिस्ट इशू हो चुकी है, तो किस दिन रखें? परसों कौन सा दिन है? जुमेरात। हाँ, जुमे को रख लें इस केस को। My lord, if the cause lists have been issued, if the cause list entire week has been issued and नहीं, तो कम से कम उन लोगों को पता तो चल जाएगा ना जुमे की। अब वो आ चुके होंगे लोग, पता नहीं किधर किधर से आ गए होंगे, तो अगर जुमे को हम रख लें, कोई और केसेस उस दिन की लिस्ट खत्म कर दें। आप क्या मशवरा दे रहे हैं? जैसे हम I think Friday is fine. If or alternatively, No, not Friday. alternatively, है ना, आपकी आवाज़ उठाए ना, मशावरत हमसे करें ना। मंडे को रखने पर alternatively नहीं, आप तैयार हैं? तो मतलब काफी, शायद आप भी थक गए होंगे या नहीं थके, तो बताएं, आप तो नौजवान हैं। मैं तो ठीक हूँ। I think we have there are 3 other councils on this side. I don't know if the petitioners have concluded or not. राइट ऑफ रिप्लाई Petitioners have concluded that there are not राइट ऑफ रिप्लाई की बात not much
Not आप किसके लिए हैं? My lord, this is the sole petition भाई from किसके लिए हैं for आप? the petitioner. We have also impugned it. यकीनन आप petitioner के लिए होंगे, नाम बता दें। Number 33. उसका नाम है number 33। Umar Sadiq versus Federation and I'm Adnan Khan, my lord. I'm Adnan Khan. अच्छा ठीक है। कितने देर बाद बहस करेंगे? My lord, 30 minutes will be more than No, enough for no, me. आपको हम नहीं देंगे। My 30 मिनट lord, कोई नई बात करें, इतनी बात My तो सुन lord, चुके नई हैं। बात ही होगी। मेरे एक submission है। A bunch of these cases. This is the sole petition from a smaller provincial unit. From a smaller province, my lord. कौन सा small province है? कौन सा small province From the है? Khyber Pakhtunkhwa, my lord. Small है? My lord. And this solitary voice may not be silenced, my lord. We are the equal stakeholders in the system. So we at least... आप पाकिस्तान, आप खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? My lord, a legal practitioner, an individual... इंडिविजुअल को कर रहे हैं ना, तो कोई किसी और को तो नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा डेट की बताएं जो आप लोगों को कन्वीनियंट है। मंडे को रख लें एंड नहीं सुबह ही हम रखेंगे। टुमारो? हाँ मंडे और टुमारो नहीं, क्योंकि मैं देखें टू बी ऑनेस्ट मैं तो चाह रहा था आज खत्म कर लें, मंडे मॉर्निंग को फिर रखें। हम वकीलों को नाराज भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो मगर मंडे को बिल्कुल मंडे को रखें, वी कंक्लूड इट ऑन मंडे। अच्छा मंडे को रात को 12, अच्छा ये सोच लीजिए आप आर्ग्यू करें रात को 12 बजे तक। अगर आप सवाल कम पूछेंगे तो हो जाएगा। अच्छा फेयर इनफ ठीक है, आपसे यही तवक्को कर रहे थे। तो मंडे को एक ही केस लगेगा और हम फिर क्योंकि बाकी लिस्ट जारी हो चुकी है तो मंडे को इशू कर देंगे। हाँ जी साहब, आप हमारे राइट ऑफ एक्सप्रेशन खत्म करना चाहते हैं? नहीं, अपना लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुशावरत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फिर आप ये लिख लें फिर। ठीक है, इस बात पे हम सब इत्तेफाक कर रहे हैं। अच्छा इसमें लिखिए, वो लिख लीजिएगा वकीलों के नाम। हैव कंक्लूडेड द सबमिशंस। आपका क्या नाम है? डॉक्टर अदनान खान। हाँ डॉक्टर अदनान खान। अच्छा किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? ऑफ क्रिमिनल लॉ। हाँ ऑफ क्रिमिनल लॉ। अच्छा represents the petitioner in 3 of 2023 is the only person अब आप वाहिद शख्स रह गए जो कि इस कानून को कहते हैं गैर आईनी है। Yes my lord. Except for there is also my petition. बात तो खत्म करने देना, ऐसे तो ना करिए। Except for section 6 of the act. ठीक है, तो आप ही वाहिद शख्स हैं, कोई और भी है? My petition is 18. My petition is 18 number. तो फिर आप लोग बैठे खत्म करें आज कानून, कम से कम इनको फिर हम नेक्स्ट डेट सुनेंगे, क्योंकि आप तो फिर हमारा फायदा ये होगा कि अभी आप लोग थक गए, तो इसका मतलब आप कम बहस करेंगे शायद। हम आप नहीं चाहते हैं आप फ्रेश हैं, दोबारा सारी बातें शुरू हो जाएंगी। तो बुनियादी आज ही हो दे तो ठीक है। आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बताइए कितना लिखेंगे, उससे 1 मिनट ऊपर नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल खामोशी से सुनेंगे और अगर कोई सवाल पूछे आप नोट करें, आखिर में बताइएगा। Your Honor, मुझे टाइम बताइए। Your Honor, my petition of 2 pages और मैं सिर्फ 15 मिनट लूंगा। अच्छा, ये आप किसकी तरफ से हैं? I'm petitioner in person। अच्छा ठीक है, 15 मिनट आपके के 15 मिनट? My lord, मैंने तो 30 की रिक्वेस्ट की है। 30 days 30 मिनट्स। नहीं आप 15 मिनट पे करें जी, सारी बातें हो चुकी हैं। Not और ये आप रह गए बाबिद साहब। जी आप देखें, नहीं पे ऐसा करें आबिद साहब, आप पहले बात कर लें, क्योंकि आप शायद दलाइल देंगे, वो शायद आपके आर्गुमेंट अडॉप्ट कर लें। पहले होता था लोग अडॉप्ट करते थे, आप वो हर आदमी चाहता है कि वो टीवी पे नजर आए, तो ये वो देखें वो बातें जो हो गई हम दोबारा ना की। ठीक है, तो आप आबिद साहब को हम पहले सुनेंगे। और कौन है पीछे? पाकिस्तान पर आप मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, लॉ को अपोज कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरफ होंगे, आप उस तरफ आएंगे ना, अटॉर्नी जनरल की तरफ। तो आबिद साहब रह गए और आप रह गए और आप रह गए। मैं ज़मान खान वर्दक पिटिशनर इन पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 10 मैंने सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज? मैं इस लॉ को अपोज कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिए रिटन अपने। हम उसको पढ़ लें, काफी बिल्कुल ठीक है सर, मैं उसी कितनी मुनासिब बात की इन्होंने, हर चीज थ्रैश आउट हो गई। चलें इनका नाम लिख दीजिए। हर्ड मिस्टर ज़मान खान वर्दक who represents the petitioner in person constitution who has filed who is a petitioner in person having filed CP number 10 of 2023 states that whatever he has that he has made his submissions, he has made his submissions in writing
and those may be considered. ये देखें कितनी मुनासिब बात है. अच्छा, आप भी ये करना चाहते हैं? आपसे पूछना खैबर नहीं आप तो आप खैबर पख्तूनख्वा वाले वकील साहब. No, my lord. No. Makes oral submissions, my lord. अच्छा, तो आप रह गए, इन तीनों के नाम लिख लें. आप और आबिद साहब, 3 लोग रह गए ना. You are representing yourself or you are representing Supreme Court Bar Association? Okay, so you are supporting or this law? ठीक है, then you 3 will argue on Monday first thing. ठीक है, keep them precise. जरा आप let Mr. Abid Zubairi, because he represents an institution, argue first. हो सकता है आपकी बातें ये कर ही दें. Fair enough. ठीक है, मुनासिब बात है. और उसके बाद फिर हम अटर्नी, इस तरफ कितने लोग हैं? Three of us. नहीं, आप बताएं, who are you all for? I'm for PM9, sir. And you are for Mr. Siddiqui? Sir, I'm for MQM. MQ. And you are for Mr. Zahid Ibrahim? Ji. Okay, so these 3 are left. And Mr. Kamran Murtaza, who made a request today through video link, so if he wants to come, otherwise then they can hear it. So try to be as precise as possible, and I think Mr. Salahuddin, you have filed your concise statement. Mr. Siddiqui, have you filed something? Before the next one. Mr. Zahid Ibrahim, have you filed? Because I was reading, didn't quite finish reading yours, but yes, you have filed something. ठीक है, so if anyone wants to file anything, please do so. It applies to everybody. But don't make it very long, just keep it more precise, that will be obliged. So now Monday, inshallah, and that should be the last day. Thank you, everyone. Thank you, sir. Very grateful, sir.